Today again we are taking the third chapter from our economics. The name of the chapter is, you know very well, poverty as a challenge, यानी कि गरीबी एक चुनौती है. In this lesson today we are taking the next topic and we are taking the part 4, part 1, part 2 and part 3 we have taken. Today we are taking the global poverty scenario as studied by the World Bank. यानी कि ये गरीबी केवल इंडिया में ही नहीं है. वर्ल्ड बैंक ने इसको कैटेगराइज किया है और इसके बारे में बताया है ग्लोबल मीन्स यानी कि पूरे वर्ल्ड में ये पॉवर्टी कैसे है. ग्लोबल, द हेडिंग ऑफ द टुडेज टॉपिक, द ग्लोबल पॉवर्टी स्cenario as studied by the World Bank. Number 1 is fall in global poverty. Fall in global poverty, it means the World Bank defined poverty as living one less than $1.90 per day. There has been a substantial reduction in global poverty. It has fallen from 36% in 1990 to 10% in 2015. Second, we are taking the regional variation. Regional variation through the global poverty is reducing, but there are vast regional variation. Poverty has declined substantially in China and Southeast Asian countries due to rapid economic growth and massive investment in human resources development, but the rate of the reduction of poverty in South Asian country is very low. Third topic they have taken, poverty in South Asia. In the countries of South Asia, the decline has also been rapid, that is 34% in 2005 to 16.2% in 2013. Now next topic they have taken, next topic number 0.4, poverty in South Sahara Africa. South Sahara Africa, the poverty in the sub-Sahara has declined from 51% in 2005 to 41% in 2015. Fifth point, poverty in South America. The ratio of poverty in South America has not changed in the last 2 decades. Number 6, poverty in Russia. Poverty in Russia, the poverty has resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was non-existent earlier. तो यानी कि ग्लोबल के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड बैंक बताता है कि कुछ एरियाज़ में गरीबी बढ़ी है, कुछ एरियाज़ में गरीबी क्या हुआ है, ख़त्म हुई है, वहाँ की पॉपुलेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है. नाउ वी आर टेकिंग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट. यानी कि एलिवेशन यानी कि रिमूव की सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए हैं. तो देयर आर द 2 प्रोग्राम, इनडायरेक्ट अप्रोच और द indirect and the direct approach. In an indirect approach, this covers achieving high economic growth rate
through promotion of small scale industries and education of agriculture. This approach is also referred as trickle down effect. It was assumed that the development of industry and agriculture would create employment opportunities and income which would lead to rapid economic development. बच्चों, इनडायरेक्ट अप्रोच का मतलब है कि यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया है ताकि हमारी जो आर्थिक दशा है उसमें सुधार हो, लोगों को जॉब मिले और जितने ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगे उतने लोगों की इनकम बढ़ेगी और हम गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे. नाउ वी आर टेकिंग द डायरेक्ट अप्रोच. अंडर डायरेक्ट अप्रोच, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च various poverty alleviation programs and food scheme to target the poor directly. इस डायरेक्ट अप्रोच में बच्चों हमारी सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो, उनके लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की है और बहुत सी स्कीम्स सरकार के द्वारा चलाई गई है. First, we are explaining Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. शॉर्ट में हम इसे मनरेगा भी कहते हैं. मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. It was started in 2005. It was passed in September 2005. The act provides 100 days assured employment every year to every rural household in 200 districts. Later, the scheme will be extended to 600 districts. यानी कि पहले ये स्कीम 200 डिस्ट्रिक्ट्स में यानी कि 200 ज़िलों में आरंभ करके देखी और जब इसके परिणाम बहुत अच्छे निकले तो इसे 600 डिस्ट्रिक्ट्स में और उसके बाद आगे बहुत सारे जो ज़िले थे वो इस स्कीम के अंतर्गत आने लगे. 1/3 of the proposed jobs would be reserved for women. The central government will also establish National Employment Guarantee Funds. Okay, similarly state government will establish State Employment Guarantee Funds for the implementation of the scheme. Under the scheme, if an applicant is not provided employment within 15 days, he or she will be entitled to a daily unemployment allowances. यानी कि इसमें 100 दिनों का क्या है बच्चों कि इसमें 100 दिनों का जॉब सिक्योर रहता है और यदि जॉब नहीं मिलता तो उसको वेजेस मिलती हैं. सेकेंड, Government has taken National Food for Work Program. National Food for Work Program NFWP. It was launched in 2004 in 150 most backward district of the country. यानी कि भारत के जो सबसे पिछड़े हुए इलाके थे वहाँ इस व्यवस्था को इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया. The program is open to all rural poor who are in need of wage employment and desire to do manual unskilled work. यानी कि जो लोग अनपढ़ हैं उनको भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत जॉब की उम्मीद रहती है. And desire to it is implemented as a 100% centrally sponsored scheme and food grains are provided free of cost of the state. Once the NREGA is in force, the NFWP will be subsumed within the program. Third, we are taking the Prime Minister Rozgar Yojana. It was started in 1993. The aim of the program is to create self-employment opportunities for the educated unemployed youth in rural areas
एंड स्मॉल टाउन। बच्चों, ये स्कीम प्रधानमंत्री के द्वारा रोजगार योजना के अंतर्गत चलाई गई। ये 1993 में आरंभ हुई और इस प्रोग्राम को चलाने का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं उन्हें इस प्रोग्राम के अंतर्गत काम मिले, ये अपना काम खोले। दे आर हेल्प इन सेटिंग अप small business and industries. Number 4, we are taking Rural Employment Generation Program. It was launched in 1995. The aim of the program is to create self-employment opportunities in rural areas and small towns. A target for creating 25 lakh new jobs has been set for the program under the 10th 5-year plan. Now we are taking 5th, Swarn Jayanti Gram Swarojgar Yojana. It was launched in 1999. The program aims at bringing and assisting poor families above the poverty line by organizing them into a self-help groups through a mix of bank credit and government subsidy. In the last, we are taking Pradhan Mantri Gramodyog Yojana. Last year, it was launched in 2000. Additional central assistance is given to states for basic services such as primary health, primary education, rural shelter, rural drinking water, and rural electrification. So student, today I have given the two important question. We have explaining two important part of this lesson. We have explaining such as describe the global poverty scenario as stated by the World Bank, or we can say describe the global poverty trends. Second, we have taken the important measures taken by the government to remove poverty, यानी कि हमारी सरकार ने गरीबी को हटाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम लिए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं. आई हैव गिवन द 6 पॉइंट. नंबर 1, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना. थैंक यू स्टूडेंट्स.